questions for you, Nitu, and we'd love to learn more about you. First of all, we heard your story. I think you are a woman of inspiration, very strong. Talk to us, how does it feel to be a woman from Bihar, going to Bollywood and then to Hollywood? How's the journey been? First of all, Honorable His Excellency Dr. Aman Puri, Reema, everyone sitting here, Rashmi, thank you so much for having me here. Reema, this is great. Everybody has been actually celebrating you since the time I've sat here, and you deserve every moment of it. From Bihar to Bollywood to Hollywood, in one line the credit is to my mother. I would have not done anything without her, and I am nothing without her actually. I got an award from Jackie Chan in Hong Kong, China since then, and I was like, what can I do more? What can I do more? And then my father met with an accident, and then I started modeling. I literally had, I used to throw pamphlets in Pragati Maidan. I used to get 200 bucks per hour, and because my Masi and everybody lives in Delhi. So this is how from there I got Garam Masala, and all of these things were happening. And in 2012-13, I realized that, I just don't want to be dancing around the trees. It just doesn't feel me. I started doing theatre. I've done Umrao Jaan. I play a girl from 17 years of age to 85. ये हिंदी उर्दू प्ले है और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं इस प्ले को करती हूँ और रेखा भारद्वाज, निदा फाजले जी, निरंजन अय्यर का लिरिक्स है, म्यूजिक है. And South India is divided into 4 parts mainly, Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada. And apart from Malayalam, I have worked in all of them, but I am going to very soon do a Malayalam film also. I'm really looking forward to that. I started traveling, and then you saw in the AV that how Hollywood happened, and I was very positive. I'll just tell you one thing because it keeps going and going. But when David Zalon met me, he said, "You are a foreigner." And the concept of foreigner for us is like, no, I'm not a foreigner. It's like, no, aren't you a foreigner? And then I realized, yes, this is how people see you, as a foreigner, but totally opposite of what we think. I was a brown girl, curvaceous, black hair, black eye, which all of us almost are, and I think we are so proud of it. Celebrating womanhood, sisterhood like this is beautiful. And when David Zalon said that, there are so many beautiful people, what is women who come to me, and how do we give a role to somebody? And I was totally not ready to do small roles, because Indian actors goes and they do big and miss roles, and they're like, oh, we're doing Hollywood. I don't want to do that, I don't want to talk about myself. You see my performance, if you like it, then you talk about me. So I said, please don't give me a small role, I'll not do it. Because if I'm doing a Hollywood film, I'm representing 1.34 billion people and 2.7 billion people globally. I'm not going to do a small role. Just don't give it to me. And then he said, we need to have that extra. I said, I am super extra. And I started laughing, and he's like, this confident? I said, yes. I'm a black belt 4 in Taekwondo. I've represented India 3 times. I'm a theatre artist, and I'm damn good. I said that. Thank you. And you won't believe this, I don't think this happened in the history ever. There was no audition for me. He invited me for lunch to meet his writer Audrey. And Audrey said, Nitu Chandra, you're a black belt 4-tan, let me write something. And by the end of the lunch, you'll be amazed to know that the producer, director, and director is a woman too, Kelly Madison, they told Audrey, write and design a character around Nitu and her skills, and it has to be one of the main leads. And Audrey wrote Jaya, which I've played, and you can see on Netflix now. So this is my little journey. But all the time I've always remembered कि ऐसे तो ना ही है ना घर पे बैठकर, कोशिश तो करना ही चाहिए. क्या होगा, मैक्सिमम ना ही बोलेंगे लोग, पहले से ना में तो बैठे ही हैं, तो एटलीस्ट जाके कोशिश करिए. यू नेवर नो वो ना हाँ में कब बदल जाए, क्योंकि ऐसे ही फिल्में मैं इंडिया में ढूंढ रही थी जो मुझे नहीं मिला. बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आई टेल यू, थैंक गॉड नहीं मिला. यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज अगर मिल जाता तो शायद मैं वहीं रह जाती और मैं ग्लोबल ये टेस्ट नहीं कर पाती, आज शायद आपके समक्ष नहीं खड़ी हो पाती. सो आई एम रियली हैप्पी, एंड दिस इज माई जर्नी टू हॉलीवुड. शुक्रिया. Amazing. And even my next question is, everybody has ups and lows in life. We've seen some of the lows in your life.
What inspires you to come out of it? How do you come out of it so strong every time you face something? Well, the most important credit I'll say is I come from a sports background. So I believe in a lot of mothers sitting here. As I said, my mother is my source of inspiration. She always said, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुमको जो करना है करो, don't worry about it. मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं तुम्हें I trust you blindly. That's a very scary phase. Mother saying I trust you blindly, and then you're very scared कि oh shit, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दूँगी मैं. इस तरह से my mother kept pushing me. एक बार मैं ताइक्वांडो खेल के आई थी और मेरी मम्मी ने बोला कि अगर टूर्नामेंट के लिए जा रही थी, मेरी मम्मी ने बोला जीत के नहीं आओगी ना तो घर में नहीं घुसने दूँगी. And I was like, इसका क्या मतलब है? And I was like 6-7 स्टैंडर्ड में थे. इसका क्या मतलब है? मतलब हम कहाँ जाएंगे मम्मी? बोले हमको नहीं पता, तुमको जहाँ जाना है जाओ, पर जीत के गोल्ड मेडल नहीं आया ना तो आना मत घर में. और हम एकदम सीरियसली, आई वाज लाइक मैं स्टेज पे जाके लड़ रही हूँ एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. दैट मेड मी फील कि तुम्हारा कैसा भी सिचुएशन हो बट यू हैव टू बी एट इट. आई बिलीव दैट छोटे उम्र में अगर हाई लेवल पे तुमने कोई भी गेम खेला हो, कोई भी स्पोर्ट खेला हो, तो बाद में आप कोई भी करियर लेते हैं, वट एवर करियर यू परस्यू, यू विल श्योरली एक्सेल बिकॉज दैट्स बीन इनकलकेटेड. नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, बीइंग ग्राउंडेड, respecting others, respecting your team. See, today you made all these things happen, and when you were giving a speech, you said, I would have not done without the team, and I agree. I totally agree. नाम शायद मेरा आ रहा हो या तुम्हारा आ रहा हो, लेकिन हमारे पीछे जो टीम है ना, उनके बिना शायद हम कुछ नहीं कर सकते हैं. And that is taught from the team game we play. So ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सारी जब लो फेजेस रहते हैं तो मैं हमेशा सोचती हूँ लोग आएंगे जाएंगे, हाथ पकड़ेंगे छोड़ेंगे, सब कुछ होगा ऐसा, लेकिन जिस दिन तुमने अपना हाथ छोड़ दिया ना वो सबसे खराब दिन होगा. देन यू आर डन. मैंने अपना हाथ कभी नहीं छोड़ा. Nitu, you are a woman of inspiration for us, but who is your inspiration? Well, I've already told 3-4 times my mother, but also women don't realize when they thank me, Reema, you too, and I met few of them here. Actually, I learn from every woman I meet every day. And having said that, I also want to thank those male feminists around, like His Excellency. He's always supported everyone. And I have seen him going out, meeting, talking to women and supporting everyone. We need male feminists. We need them. We cannot do without them. And people say, oh, men. No, I'm here to support ourselves, yes, women, but not against. I'm not thrashing men. We cannot do anything without them. We have to go together, in the society, and then ask them, this is what I'm looking at. So for me, my low phase has been that I know I've always been got supported by my mother, but all the women, even Rashmi Uday Singh sitting there, she's a fighter. She's been heading Times of India for ages when it started in India. Since 15 years I know her, she's a fighter. I know so many women who are fighting, and I learn from all of you. You have no idea how much I learn every day, and little things matter. Very little things matter actually. Big engineer, doctor and all these things we still become. But those little things of etiquettes of life, talking to people, being humble, even how your nails are looking, how you bought your door is, and all these things matter a lot, I will tell you. That will get you the job actually at the highest level, than to having those degrees. Because those degrees a lot of people have those degrees. What will be that special nuance will be how you present yourself, and it's very, very essential, very, very essential. I feel that, ladies and gentlemen, without that, you cannot reach to the top. You want to have an average life, it's fine. But if you have a passion, you want to go and do something, this is also very, very, very important. Amazing. My final question, and I think you've already mentioned some of it, but your message to 55,000 Indian women in Dubai watching you today? My message would be, please don't box yourself. Go out, make opportunities. The world will help you. Manifest, be very positive, fight your life, follow your passion, be courageous. Just do what you think is right. Because there will be a lot of people to pull you down. But focus on that one person who has faith in you, has belief in you, who says you can do it.
And I don't think that anyone doesn't have that, even that's a family member or a friend or anything. Just go out, one life, and we have to live with happiness, passion, and whatever makes you peaceful, whatever makes you happy, do that. Don't follow others. Do feel what makes you feel happy. Please do that. Follow your passion, and I promise you, your smile will never go. You will always be smiling. थिएटर से मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जब मैं स्टेज पे खड़ी होती हूँ तो मैं अपने आप को जीवित महसूस करती हूँ. मुझे लगता है एक एक क्षण जो मैं स्टेज पे खड़ी हूँ और जब लोग सिर्फ मुझे देख रहे होते हूँ और मैं उनको देख कर बात करती हूँ. और मैंने जो उमराव जान किया है उसमें 9 मोनोलॉग हैं, एंड वो प्ले उमराव जान एम्पावरमेंट ऑफ विमेन पे ही है. वो जो रेखा जी की मूवी है वो लव स्टोरी सिर्फ नहीं है. और चूँकि आपने ये बात कह दी, आई जस्ट वांट टू, मैं एक छोटा सा मोनोलॉग बोलना चाहूँगी अगर आप लोग इजाज़त दे तो. डू यू हैव सो रीमा, दिस इज़ उमराव जान, और जो मैं उमराव जान कहती हूँ हिंदी उर्दू में. अक्सर क्या होता है कि लड़कियों को ना तुम बोलते कि तुमको जो पहनना है पहनो, लेकिन अगर छोटे कपड़े पहन के जाओ तो कुछ ना कुछ कमेंट आएगा ही, अरे देखो वो छोटा कपड़ा पहना है. अब आज के वक्त में भी ऐसा ही है, लेकिन बदल रहे धीरे धीरे. अगर आप अपनी चाचियों के साथ बाहर जाओ तो बोले अपनी मम्मी से नहीं पड़ता होगा शायद, इसलिए चाची के साथ जाती है. जब मम्मी के साथ जाओ तो बोले देखो माँ बेटी घूमती रहती है. सो कुछ ना कुछ क्वेश्चनेबल रहता ही है हमारे यहाँ, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, हमको जो करना है हमको वो करना है. दैट्स इट, डजंट मैटर. सो मैं उमराव जान के एक मोनोलॉग कह रही हूँ जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के बारे में. और उमराव जान इस वक्त 17-18 साल की है, और उमराव जान उस वक्त आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद लड़कियों की आज़ादी का सपना देखती थी. क्या उन्हें आज़ादी मिलेगी, आज़ादी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, और उसे हमेशा अलग समझती थी. तो उमराव जान 17-18 साल की हैं, और उनकी जो हेड हैं वो कहती हैं, खानम जान कहती हैं, उमराव जाओ बड़े लोगों के साथ उठो बैठो, हो सकता है इस सदी में आज़ादी मिल जाए. तो उमराव जान कहती हैं, खानम जान आज़ादी यानी लड़कियों को भी आज़ादी? तो कहती हैं, अरे कितना आज़ाद होना चाहती हो, मर्जी का खाती हो पहनती हो, कोई रोक टोक नहीं है, और कितना आज़ाद होना चाहती हो? तो उमराव जान कहती हैं, खानम जान सोचती हूँ आज़ादी यानी बेपर्दा पर बदनाम नहीं, आज़ाद ख्याल पर बाजारों नहीं, बेतकल्लुफ पर दस्तयाब नहीं. हमें ऐसा लगता है जैसे जन्नत हूरों से होती है, और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान जन्नत में तब्दील हो जाएगा. लड़कियां बेखौफ छन्नों की तरह फूटेंगी और लहरों की तरह इटलाती जहां मन चाहेगा वहां जाएंगी. फिर भाप बनकर उठेंगी, मनचाहा बादल बनेंगी, कहीं बरसेंगी तो कहीं रूई के फाहे की तरह हल्के से बैठ जाएंगी. फिर बादल बनकर उठेंगी और ओस बनकर उलझाएंगी. सबब ये कि लड़कियां जो चाहेंगी करेंगी, जहां मन चाहेगा वहां जाएंगी. अगर बाजार भी जाएंगी ना तो खरीदने, खुद बिकने नहीं. और अगर नाचेंगी भी तो तवायफ नहीं कहलाएंगी, लड़कियां लड़कियां कहलाएंगी. न पूजी जाएंगी और ना ही जलील की जाएंगी. वो जैसी हैं वैसी ही रहने दी जाएंगी. है ना खानम जान, आज़ाद हिंदुस्तान में होगा ना ऐसा. आमीन आमीन आमीन. तो ये तो आपका पहला जवाब है. दूसरा जवाब ये है कि यहाँ पे बैठी और दुनिया में कहीं भी कोई भी फीमेल को कभी भी मेरे तरफ से अगर मैं कुछ भी कर सकूं, प्लीज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, एंड इफ आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट आई विल ऑलवेज डू इट. आई हैव डन इट इन द पास्ट एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि अगर कुछ हो सके और कुछ कर सकती हूँ. इसीलिए जो मैंने प्रोडक्शन हाउस खोला है अबू धाबी में, इट्स कॉल्ड Champaran Talkie Studios for Hollywood and International Cinema, and it's an all-women production house. So ये बहुत ही important था मेरे लिए. लोग कहते हैं ना कि लड़कियां साथ में काम नहीं करती. I will tell you, I don't think that. I think it's such a passe when people say women don't. I think women together make much more efficient team, and the production comes out great. Any product you do. I have 27 team people globally working in India, in LA, in London. यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उसमें से 23 लड़कियां हैं. और मुझे इतनी खुशी होती है, और सब एम्पावर्ड और सब स्ट्रॉन्ग, और मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे टीम में 23 लड़कियां हैं, क्योंकि everyone runs to prove themselves and they are so fantastic. I just love them all. So कभी भी आपको लगे कि मैं कुछ कर सकती हूँ, you all are my team, my agency,
my managers, my sisters, and I think sisterhood is what we are celebrating today. So happy Women's Day to all of you and everyone who's watching me. Thank you so much. That was extremely inspirational.